بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات۔ آج ہماری آن لائن اکیڈمی میں میڈم نے جو کویشچنس پوچھے ہیں اسٹوڈنٹس سے وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ڈسکشن جو ہم نے کرائی ہے اسٹوڈنٹ سے اسرائیل کے ایشو پہ، تو اس پہ بھی آپ خیالات ملاحظہ کریں گے اسٹوڈنٹس کے۔ سب سے پہلے کویشچنز ان کے آنسر اور اس کے بعد ڈسکشن، آئیے سنتے ہیں۔ Okay. Question number 1. Where is the headquarter of SARC located? Ma'am, the headquarter of SARC is located in Nepal, Kathmandu. Ma'am, Nepal. Who started the World War I? Ma'am, 1916. Austria and Hungary, ma'am. Ma'am, Hungary and Austria. Ma'am, Austria and Hungary started the World War I. What is the capital of Turkey? Ma'am, Ankara. 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 Where is the headquarter of FIFA? Ma'am, the headquarter of FIFA is in Switzerland, Zurich. Moscow, Russia. Zurich, Switzerland. What is the old name of Cento? Old name of Cento, ma'am, Baghdad Pact. Ma'am, the old name of Cento is Baghdad Pact. Very good, Baghdad Pact. Which is the oldest city of India? Varasani, Uttar Pradesh. Ma'am, Uttar Pradesh and Varanasi. Ma'am, Varanasi, Uttar Pradesh, India. Ma'am, Varanasi, Uttar Pradesh is the oldest city of India. Ma'am, Varanasi and Uttar Pradesh. Varanasi and Uttar Pradesh. The oldest city of India, Varanasi, Uttar Pradesh. Beta Varanasi and Uttar Pradesh. Varasani nahi, Varanasi. What is the official language of Brazil? Official language of Brazil. Ma'am, Portuguese is the official language of Brazil. Portuguese. What is the capital of Norway? Ma'am, Oslo is the capital of Norway. Oslo is the capital of Norway. Capital of Norway is Oslo, O-S-L-O. Okay. When was European Union founded? Ma'am, 1st November 1993. Ma'am, in 1993. 1st of November 1993. Ma'am, 1st November in 1993. Ma'am, 1st November 1993, Maastricht, Netherlands. The last question. Who is the father of Hazrat Muawiyah Raziyallah? Abu Sufyan ibn Harb is the father of Hazrat Muawiyah Raziyallahu ta'ala. Abu Sufyan ibn Harb, ma'am. Abu Sufyan ibn Harb. Okay, thank you. And mashallah, all participated very actively, and I hope you will keep it up. And the next test will be 46 to 50, inshallah, tomorrow. Thank you and Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Okay, ma'am, Jazakallah. Allah Hafiz. I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Me Zubair Rahim from Gwadar. I hope you all are fine. So today our topic about kya Pakistan ko Israel پر حملہ کرنا چاہیے. So according to my knowledge میں یہ Assalamu alaikum, my name is Mohsin Ali from Karachi. Today our topic is کیا ہمیں پاکستان کو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے. تو Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Mohammad Atif Khatak from Sangar. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا، کیا پاکستان کو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی نیم از محمد یاسر. السلام علیکم ladies and gentlemen. My name is Husnain Ali and I am from Gujranwala. Today's our topic for discussion is کیا پاکستان کو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں. تو میرے پوائنٹ دیکھیں چیسٹ نمبر 181. جی بالکل، چیسٹ نمبر 5. جی جنٹلمین، میں آپ سے ایگری کر
Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Muhammad Umar Arif and I am from Sialkot. Gentlemen, first of all, we have to see that we are Muslims and chest number 317 देखें जैसे Chest number 31. देखे आते भाई बिल्कुल देखें जंग के नुकसानात भी हैं। Number 315, you are also right. But this and last, this battle is if the situation chest number 315 and for Muslim ये लोग अगर आज देखें ज़ुबैर भाई this does not matter. Deen Islam. but chest number 31 देखिए जेंटलमैन आपके पास Gentlemen, first देखें chest number 31 we should try it. देखें यकीन की बात की जी ये सिर्फ थोड़ा सा जस्टर दिया कि डिस्कशन हुई है काफ़ी, और सारी डिस्कशन हम शामिल नहीं कर सकते, यहाँ पे दिखा नहीं सकते क्योंकि फिर हमारी वीडियो जो है बहुत तवील हो जाती है। और इसके अलावा ये सामने शो हो रहे हैं जो मैसेजेस, ये ज़रा मुलाज़ा फरमा लें, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा तैयारी हम कैसे करवा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़े जोश व खरोश से पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, इनमें कॉन्फिडेंस भी आपको नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहेंगे। वैसे डिस्कशन हमारी होती है तकरीबन 15 मिनट की, लेकिन आज डिस्कशन हमारी 45 मिनट की हुई है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। सब स्टूडेंट को शाबाश देता हूँ और साथ ये कहूँ कि मज़ीद इम्प्रूव करें ताकि वहाँ आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो, आप सेलेक्ट हों। लास्ट में मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जिन स्टूडेंट ने मेरे से नोट्स मंगाने हैं या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो सामने जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप करें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या CSS की तैयारी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।